नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सूत्रधार के इस टॉक शो कही सुनी में। आज हम लोगों के पास एक गेस्ट हैं, शिव कुमार, और हम शिव कुमार से बातें करेंगे भारत की महान महिलाओं के बारे में, महान स्त्रियों के बारे में जो हमारे प्राचीन साहित्यों में पाई जाती हैं। और बात शुरू करने से पहले शिव कुमार के बारे में दो शब्द बताना चाहूंगा। So Shiv Kumar is an IT professional who has great interest in our Itihas, Puran, and our civilizational study. And he was one of the authors of one of the stories in the anthology Unsung Valor, which was published by Indic Academy and curated by Sai Swarupa Iyer. He is the curator of this new book called Aryaa, which has been launched very recently. And we would talk about the book as well as the subject matter of the book, and that is remarkable Vedic Woman. So, without further ado, Namaste Shiva. नमस्ते गौरव जी। So Shiva, welcome. आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी जो आर्या पुस्तक है, इसकी जो जर्नी है, ये कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, जरूर गौरव। वो ऐसा था कि बचपन से जो मैंने बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी थी, उन सब में परंपरा में भारतीय महिला काफी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर चुकी है। दे हैव शेप्ड द सिविलाइजेशन। हर तरह का रोल प्ले कर चुके हैं। दे हैव बीन स्कॉलर्स, वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टेट्समैन, एवरी काइंड ऑफ रोल वो प्ले कर चुकी है। लेकिन फॉर सम रीजन आधुनिक काल में the narrative has been that they have not been prominent in the past और पुरुष के पीछे रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास पुराण वहां से लेकर के 1800 तक आए तो द नैरेटिव रियल ऐतिहासिक जो एविडेंस है वो कुछ और ही बोलती है। तो ये मेरे मन में था कि ये जो नैरेटिव है उसको बदलना चाहिए, ऐतिहासिक आधार के उसके डिपेंड एविडेंस को यूज करके। और इन सब चीज में मुझे सबसे बहुत ज्यादा दुख इस बात का होता था कि सती सावित्री का जो नैरेटिव है आधुनिक काल में, ये तो इतिहास पुराण में जो नैरेटिव है उसका तद विरुद्ध नैरेटिव है। करेक्ट। इतिहास पुराण में अगर हम महाभारत को पढ़े या किसी और रेफरेंस को पढ़े तो ये पता चलता है कि सावित्री शास्त्र पारंगत थी और महाराजा अश्वपति ने उसको एक राज्य को संभालने के लिए जो शक्ति चाहिए, विद्या चाहिए, उसके लिए उसको ट्रेन किया था। और वो वॉरियर भी थी और उसके लिए एक सही पति चुनना असंभव बन गया था क्योंकि वो इतनी विद्या पारंगत थी। इसके लिए उसको दूर दूर देश जाके खुद के लिए पति चुनने का एक अवसर मिल गया। That itself was an exceptional thing. और सावित्री जाती है, फाइनली वो सत्यवान को चुनती है और जब पता चलता है कि सत्यवान 1 साल में मरने वाला है तो फिर भी वो सत्यवान को ही शादी करना चाहती है। अश्वपति मना करता है लेकिन सावित्री अपने निर्धार पे अचल रहती है और
अंत में शादी होता है और यमधर्म से लड़कर वो सत्यवान को वापस ले आती है और सावित्री के कारण द्युमत्सेन सत्यवान के पिता को उसका राज्य वापस मिल जाता है। मतलब हर तरह से सावित्री, जैसे कि आपने बताया, शी इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। और सती सावित्री को सबड्यूड दिखाने का आधुनिक का जो नैरेटिव है वो कुत्सित है। और मुझ में ये बहुत सालों से था कि ये बदलना है। और जब इंडिक अकेडमी के जो हेड है हमारा हरिकिरण वडलामणि गारू, जब उन्होंने एंथोलॉजीज कॉन्सेप्ट किया तो मैंने ये एंथोलॉजीज विमेन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत हमने अनाउंस भी कर लिया और 6 महीने में हमें काफी अच्छे कहानियां लेखन मिल गई और ऐसे प्रारंभ हो गया हमारा। तो वेरी इंटरेस्टिंग शिवा। एंड जैसे सावित्री की स्टोरी के बारे में हमने भी पहले भी बात करी है कि सावित्री को पता था क्या करना है। सावित्री ने सब कुछ प्लान किया था। वो चांस एनकाउंटर नहीं था यमराज के साथ। उसने प्लान करके पूरा कि भाई मैं ये करूंगी और ये कोई ज्ञानी पर्सन ही कर सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो ये नहीं कर सकता। अंत्य दिन में वो सत्यवान के साथ ही रहना चाहती है। एग्जैक्टली तो और एक उसको क्षण पता भी था कि कैसे कैसे हम मुझे उस चीज से, सिचुएशन से डील करना है। उसने उसकी प्लानिंग करी थी। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ही गई और यमराज मिल गया, उसने बोला अच्छा चलो बात कर लेते हैं एंड एक्सीडेंटली शी गॉट व्हाट शी गॉट। No, she planned for it. She meticulously 3 days before she started fasting for it. I mean, she was preparing for it, right? She was wanting to be on her most elegant and most what you can say sainthood वाला जो सिचुएशन होता है। She wanted to have that persona when she meets Yamraj, and she knew that she will meet Yamraj somehow, right? तो उसने कुछ तो उसको ज्ञान था। हर रीति से आधुनिक काल में सावित्री शुड बी अ रोल मॉडल। एग्जैक्टली तो मैं तो बोलता हूँ कि सत्यवान का तो गेस्ट अपीयरेंस है उस कहानी में। सावित्री से शुरू होती है और सावित्री पे ही खत्म होती है। और केवल सत्यवान का जीवन नहीं, अपने जैसे बोला कि अपने सत्यवान के पिताजी का राज्य वापस मिलता है और उसके अलावा उसके पिताजी को भी पुत्र मिलते हैं। क्योंकि उसके पिताजी भी केवल सावित्री ही उनकी इकलौती संतान थी और वो यमराज से इंश्योर करती है कि उसके पिताजी का भी भला हो। तो वेरी रिमार्केबल वुमेन। तो ये तो रही बात मोटिवेशन की। एंड काफी स्ट्रांग मोटिवेशन है एंड आई एग्री विद यू। बट थोड़ा सा प्रोसेस में भी डिटेल में अगर जाएं कि कैसे आपने ये एंट्रीज कोलेट करी, कैसे ऑथर्स आपसे जुड़े, और उसमें अगर थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें तो और अच्छा होगा। हम इंडिका में एंथोलॉजीज करके एक कॉन्सेप्ट है। इसका आइडिया ये है कि हमारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से लिख सकते हैं और उनको प्रारंभ करना चाहिए। और एंथोलॉजी इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि एक पूरी तरह से एक पुस्तक रचना करने की वो जो उसका श्रम अलग है, लेकिन एक कहानी, एक एस्से लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लेखकों को हम सामने ले आ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एंथोलॉजीज बन रहे हैं। पिछले बार कुरुक्षेत्र की जो युद्ध की एंथोलॉजी था और अब ये है, और इसके बाद में 2-3 और है। एक महाभारत के नॉट वेरी वेल नोन कैरेक्टर्स का है और उसके बाद में एक साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशनशिप के बारे में, तिलक के बारे में। और इंडिका के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे एंथोलॉजीज बन रहे हैं। तो इस एंथोलॉजी में प्रोसेस ये है कि जब हम अनाउंस करते हैं
तो 2-3 महीना वक्त रहता है समय, और लोगों को ये हम बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें क्या लिखना है। और अंत अंत एक 3-4 महीने के बाद ड्राफ्ट्स मिलते हैं हमें। काफी काफी सारे, बहुत सारे ड्राफ्ट्स आए थे, और उनमें से कुछ ड्राफ्ट बाद में देखेंगे। 10 ड्राफ्ट हमने चुना। उसके बाद uh, the the way we go about choosing it is based on, how much it is aligned with the concept of the anthology, a woman of substance. So आप जो characterization दिखा रहे हैं, वो the essence of the anthology, how much it is aligned to that. So उसके हिसाब से 10 कैरेक्टर हमने चुना, 10 स्टोरीज को चुना। उसके बाद में we went about multiple rounds of reviews. One round of review on what aspect of the tradition is well covered, what is not well covered, और जो creative liberty है वो within the boundary of the tradition है कि बाहर चला जा रहा है, और कैसे उसको बैलेंस करें। और एक पूरी तरह से वेल राउंडेड है। फर्स्ट लुकिंग इनटू ऑल द सब्सटेंस मैटर ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद में सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स एंड रिव्यूज ऑन द राइटिंग। ऐसा है कि ड्राफ्ट लिखना 20% काम है, और उसको आखिर तक ले जाना, अंत तक ले जाना, वो है 80% का काम। तो मल्टीपल रिव्यूज, देन वर्कशॉप विद सीनियर राइटर्स, एडिटर्स, ये सब करने के बाद अंत में ये बनता है। और इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि एवरी ऑथर रिव्यूज एवरी स्टोरी, all of us review every story, and then ideas, thoughts, perspectives, they merge, and then it gets the form of a single book. It has to get to the form of a single book. So we had a lot of, we became a family. I'm not even exaggerating. We gelled well because of the COVID situation. समय भी कुछ ज्यादा ही लगा, but we spent it well. We engaged with each other very well. Finally, I'm happy with the final product that we have. So this is the overall process of the anthology. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑथर्स ट्रेन भी कर रहे हैं इस प्रोसेस से, कि जो लोगों ने पहले कभी कुछ अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है ब्लॉग वगैरह में कभी कुछ लिखा हो या छोटा मोटा पोस्ट लिखा हो, या कुछ और कैरियर है, कोई आईटी में जॉब कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ऑपरेशंस में काम कर रहा है, लेकिन उनको क्यूरियोसिटी है कि भाई, और उनको ईगरनेस है कुछ लिखने की, कुछ रिसर्च करने की। इट हेल्प्स देम। Absolutely, that is the objective of the anthology. And आर्या में ऐसा था कि कुछ जने पहले लिख चुके थे और पहले पब्लिश हो चुके थे, सीनियर लोग भी थे, और कुछ जने नए भी थे। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ इन आर्या। एंड इन अच्छा भी है वो, एक एक्सपीरियंस लोगों से इनएक्सपीरियंस लोग भी सीखते हैं। तो और आप देख रहे हो कि सामने वाला, मतलब इन एक्शन आप देख रहे हो किसी को। इट्स नॉट लाइक कि वो लेक्चर दे रहा है कि भाई ऐसे करो बोर्ड पे या वीडियो कॉल पे समझा रहा है। उससे कहीं बेहतर है कि उसको आप इन एक्शन जब देखते हो कि भाई उसने कुछ लिखा और खुद लिखा है, तो आप देख रहे हो कि भाई ये जो रूल्स ही हमको ज्ञान दे रहे हैं वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। अगर इनके लिए करते तो हमारे लिए भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन इट्स अ गुड प्रोसेस। and in this process all of us become critics and book reviewers also, because एक पैराग्राफ को देख के 10 जने will feel 10 different types में वही लिख सकते हैं। Then it becomes a very interesting proposition, because वस्तु वही है
लेकिन वस्तु का जो वैशिष्ट्य अलग अलग तरीके से you are able to it's like a designing, even a paragraph is like designing. So that creative process is very enjoyable to see 10 different people doing 10 different things. और एक पब्लिश होने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है कि अभी तक मैं राइटर था, अब मैं ऑथर बन गया हूँ. सो वो राइटर से ऑथर का जो ट्रांजिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कॉन्फिडेंस एक आपको आता है तो आप और लिखना चाहते हो और आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है. कल को आप पब्लिशर के पास जाओगे तो आपके पास एक रेज्यूमे है जिसमें एक लाइन है कि भाई आई वाज पब्लिश्ड बाय सो एंड सो पब्लिकेशन. करेक्ट. तो आई थिंक मैं तो राइटर लोगों के साथ काम करता हूं तो मुझे ये काफी एक अच्छा एक आपका इनिशिएटिव लगा क्योंकि इस जॉनर में लिखने के लिए मुझे लगता है कि लोग हैं जो लिखना चाहते हैं और इसमें उनको एक तो जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है समहाउ I believe कि वो they are not coming together to encourage this segment of people very collectively. It's thanks to few authors who actually did good work and became breakout stars that gave some confidence to these people. But them getting themselves published and more things coming in the market is actually a good thing, and people get to read about these stories. That is another great thing, right? एक पूरी महाभारत पढ़ना is tremendous effort. Yeah. But बुक पढ़ना और उस बुक में भी एक स्टोरी पढ़ना इज अ मच लेसर एफर्ट. तो अगर आप बहुत बिजी भी हैं जीवन में तो आप 2 कहानी तो पढ़ ही सकते हैं और अगर उससे आपको कुछ जानने को मिला तो वो बहुत अच्छी बात है और ये जानना जरूरी है क्योंकि लोग जनरली मेरा ये मानना है कि टीवी वगैरह में अगर आप देखो तो आपके बच्चों को कौन हीरो मिलते हैं, सिंड्रेला एंड ऑल दीज पीपल, राइट? Why my daughter has to look up to Elsa when she is watching some content? She can look up to some of these remarkable women who have done great work at tremendous odds also at times and came out with flying colors. And this actually teaches them valuable lessons also, I hope. So my next question, Shiva, is about the book itself. So in this book, I understand there are 10 stories. Yes. Was there some reason behind picking up 10 and how did you go about choosing which 10 would go? Was there some science behind it or you were like, okay, I mean, you touched upon briefly that it should coincide with the theme of the book, but I believe they would have received many more than 10 manuscripts, and even within the theme you would have to have some process of selection. So can you please talk about that? Yeah. I think जो ड्राफ्ट्स आए थे उनमें से बहुत सारे अच्छे ड्राफ्ट्स ही थे. मतलब from the substance standpoint, they were all aligned with the concept of the anthology, but I chose based on the ones that were more ready. That was the obvious choice. और उसके बाद the some of the stories that needed to be told the way they ought to be told. Some stories are quite well known. Some characters are really well known. For example, Draupadi. अगर किसी ने द्रौपदी के बारे में लिखा होता तो I would have not picked it simply because we have good number of novels. Our own Sai Surpaya is really brought out the essence of Draupadi, spectacularly from the traditional standpoint. And, I read that book. I mean, it's really well written. Yeah, in that, the fact that it's Draupadi who tilted the situation in the Kuru Sabha is really very well brought out. I mean, she's the hero of that moment. Correct. I mean, without her, the Pandavas would have ended up slaves. Yes. So that part is already well edged out. So I would have not picked that. Like that, and some stories which were not fully fleshed out. सारे जो dimensions नहीं थे, तो उनको मैंने बाद के लिए रखा. So that's how. And some stories which I saw potential in them, but it needs lot of rework to be able to get there. So ऐसे भी कुछ कहानियां मैंने
side में रखा. So we can safely say there will be sequels to this book. There ought to be a sequel. I mean, there ought to be multiple sequels, and it's not the journey of one single person. It has to be the journey of a community to bring this down. You will have at least nothing less than, if you blink your eye and open, you will be able to count 200 characters in the whole just in the epics itself. At least, yeah, at least. I'm not even coming out of the epics. Epics mainly we will get 200 fascinating characters. So there is a character by name Chandali, say Chandali in Mahabharata. The story with Garuda that is so fascinating. I'll not go into the depth of that here, but she teaches, a lesson that even thought, will have consequences. Garuda learns that from, say, Chandali. And so on and so forth. So we wanted to bring out 10 essential, stories. Either the characters are not well known or the dimensions are not well known. So I say, pick here, and then we. So there are 10 stories, and next question will be a very difficult one for you, because I am now going to ask you to choose कि उस 10 में से अगर आपको फेवरेट पिक करना है तो कोई है फेवरेट, या आप मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बता पाना. Difficult, and I also would want to not really tell my favorite, because okay, मैं it will bias the audience. बता दूंगा तो then needlessly focus वहां चला जाएगा. So not yeah, there are two kinds of favorites. One is the character being favorite. Other being, ये जो कहानी है जो this is bringing out a dimension that is not at all there in, it is a real possibility within the tradition, within the boundary of the tradition. But like in this dimension has not come. As a favorite. Like that I have, but what I have made sure is that I have something favorite in every story. That's how that's a good way to answer it. I would take that. I will not. Hopefully, after 1 year or whatever, once there is enough reading of the book, then I'll pick my favorite. Good, interesting. So maybe we will have another such conversation. Maybe when the next book comes out, the sequel of Aryaa, then we will talk about this also. Which one is now your favorite will change, because अभी लिखते वक्त एक favorite है, but once the impact begins to show, there will be some other favorite, hopefully. Interesting. So इसमें एक मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, वो ये कि जब आप कैरेक्टर्स पिक कर रहे हो, तो जैसे आपने बोला कि कुछ बहुत पॉपुलर है जो आपने ऑब्वियसली नहीं पिक किए क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा जा चुका है. कुछ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं जिनके बारे में हो सकता है कम लिखा गया हो, वो भी हो सकता है ना. और कुछ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं बट बहुत कुछ लिखा भी गया उनके बारे में, लेकिन जो लिखा है वो शायद different than the story that you want people to know, or than the story the epics are telling. वो भी है. उसमें आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए, वो कैसे आप पिक करते हो? Variety. So I made sure that dharmartha kama moksha, everything should be there in equal proportion or in the right proportion. That was one another but that it's not that I decided it earlier itself like that. जब select कर रहे थे तो that was another theme that emerged. See, most stories selected themselves. मुझे इतना I did not have to struggle for that. Last 2-3 stories select करते वक्त then I struggled a lot. Because there were some more candidates and it was difficult for me to say, which ones to pick. There was, in fact, a couple of extremely well written, but very well known characters and already well written characters. So then I had to, sidestep them and say that, okay, बाद में select करेंगे, because we will try to find out new dimensions.
stories were well written. So that is how it is. So finally ये जो 10 select जो हमने किया, it was not very difficult finally to select them. It was they all selected themselves quite easily, I would say. तो अगर हम रिमार्केबल वुमेन ऑफ आवर हाँ बोलिए बताइए शिवा, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। हिंदी में तो मैं बातचीत तो कर सकता हूँ, लिख तो नहीं पाऊंगा हिंदी में। मनीष जी और गौरव जी को करना पड़ेगा एक काम। और हिंदी के अलावा फिर आप कन्नड़ में कर सकते हैं। ये लेकिन to answer this question more seriously, but yes, it is required to bring this. See, we need to retell our stories for contemporary times at all times. Okay, every 30 years a different form आना ही है. This is how the tradition rolls over itself, and it's not that why did Kathasarit Sagar come, right? It came as, and why did so many Vyakhyanas come? Why did Kalidasa have to write Vijnana Shakuntala, right? When you had Shakuntala of Mahabharata, which is actually very different. Frankly speaking, no, Kalidasa changes the character of the Vastu significantly, but to serve some other purpose. So there will always be a contemporary purpose, और हमें इसको reflect करते रहना चाहिए. We'll have to keep on mirroring it. But then मैं कन्नड़ा में लिख सकता हूँ, लेकिन किसी को हिंदी में करना पड़ेगा. मैं इतना तो बात तो कर सकता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा. तो मेरा एक पर्सनल बिलीफ ये है कि जब आप इस तरीके का कोई साहित्य पढ़ते, लिखते या सुनते हैं, देखते हैं, तो अपनी भाषा में ज्यादा अच्छा लगता है. और डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अल्टीमेटली we are all seeking to bend English for our ध्वनि, but हमारी ही भाषा में जो ध्वनि है वो that is very readily available for us and it will go deep into hearts. तो जैसे कि सूत्रधार में हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उड़िया ये सब भाषाओं में लिखते हैं और कहानियां बनाते हैं, तो कई बार हमको ये सिचुएशन आती है कि यार ये हिंदी में शब्द है बट इसका इंग्लिश क्या लिखें. और कई बार हमको, अब जैसे एक शब्द था, एक अभी हमने एक स्टोरी करी थी, पतिव्रता का वरदान. तो किसी ने, मेरी टीम ने पूछा कि इसका इंग्लिश में क्या हम टाइटल बनाएं. हमने कहा अंग्रेजी में पतिव्रता नहीं होती, तुम पतिव्रता ही लिख दो. तो वी वेंट विद द टाइटल पतिव्रता boon. Yeah, if we translate brahmachari as celibate, then the original essence of brahmachari is lost. Yeah, I mean, brahmachari is celibate, but then Arjun is called practitioner of brahmacharya, right? That is why he could draw and pull out brahmashira weapon, right? Ashwathama couldn't because he was not a practitioner of brahmacharya. But अगर आप celibate meaning लोगे तो लोग confuse जाएंगे. That was more Bhishma. Yeah. But other than Bhishma, we don't have many of those characters in our epics. So yeah, I mean the essence itself changes. In fact, कई बार तो बहुत simple words होते हैं कि जैसे भगवान है, तो बहुत बार लोग लिखते हैं लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड. तो मैं बोलता हूँ मतलब शिव जी भगवान है, लॉर्ड तो माउंट बेटन भी थे. That's how I jokingly tell people. And the relationship between Rita, Rutu, and Rishi, and the collection of all words that start with Ru, we will not be able to establish that entire ontological universe in English directly if we translate word by word. Correct. So hopefully आप और आपकी जो टीम है वो ढूंढेंगे लोग जो इसको ट्रांसलेट कर सके. In this book, we have retained a lot of Sanskrit words as they are wherever it is necessary. That is one way of adopting English to our needs, as you have said. At least nouns, important nouns, ought to be retained.
should not try to translate Rita, should not try to translate Dharma, should not do that. करेक्ट, क्योंकि उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड है नहीं, और जो नियरेस्ट वर्ड है वो भी बहुत दूर है, बहुत दूर है. and it changes the meaning, it changes the nature of the story itself at times. And sometimes I tell people कि बहुत सारी जो भ्रांतियां, कल हमारा जो बातचीत हो रही थी वो भ्रांतियों के बारे में हो रही थी, तो बहुत सारी भ्रांतियां जो होती हैं वो इस वजह से ही आ जाती हैं कि आप ज्यादातर ट्रांसलेटेड वर्क कंज्यूम कर रहे होते हो, और वो ट्रांसलेटेड वर्क में हो सकता है अनइंटेंशनली उसको मीनिंग ही नहीं पता, और उसने कुछ, जैसे मान लो कोई वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग है और उसने गलत वाला मीनिंग डाल दिया. Yes. तो फिर आप क्या करोगे? और आपको तो लगता है कि इस आदमी ने इतना सारा सही किया है ट्रांसलेशन, तो कुछ तो सोच के ही किया होगा. तो we go by, we associate a certain degree of credibility to the author, to the translator, and we then, I mean, और आज की डेट में उसकी क्रेडिबिलिटी का जो हमारा यार्डस्टिक है वो भी बहुत हल्का है. मतलब हमें, मैं किसी को एग्जांपल दे रहा था कि जैसे व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे फॉरवर्ड भेजा, और लेट्स से वो कोई डॉक्टर साहब है, अब हिज स्किल इज मेडिसिन, राइट, बट ही इज अ रेस्पेक्टेड पर्सन, ही हैज फॉरवर्डेड समथिंग इन द फैमिली ग्रुप. आप बोलोगे डॉक्टर साहब झूठ थोड़े बोलेंगे, राइट? सो इवन इफ ही इज, लेट्स से टॉकिंग अबाउट लेट्स से सम पॉलिटिक्स और समथिंग, आप बोलोगे नहीं वो डॉक्टर साहब ने बोला है तो सही बोला. नाउ यू हैव एसोसिएटेड दैट क्रेडिबिलिटी and you extended it to a different subject matter which is not his strength. Absolutely. तो ऐसे करके बहुत सारी भ्रांतियां हमारे वहां प्रोपोगेट हो रही हैं, और उसका ही रिलेशन मेरा, जैसे आपने कालिदास का नाम लिया, तो जैसे कालिदास की शकुंतला और महाभारत की शकुंतला बहुत अलग है ना. कहानी तो अलग है ही, आप कहानी अलग कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑल्सो, करेक्ट, कि आप वो सेम कैरेक्टर को एक डिफरेंट सिचुएशन में डालो, नई कहानी बन गई. लेकिन कालिदास के केस में वो कैरेक्टर भी अलग है. शकुंतला जो कालिदास की है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला, महाभारत की शकुंतला बहुत अलग है. महाभारत की शकुंतला बैठ के रोती नहीं है, वो जाके अपने अधिकार के लिए लड़ती है. वो दुष्यंत को ओपन कोर्ट में चैलेंज करती है कि तुम कौन होते हो, मैं अप्सरा की पुत्री हूं, तुमने अपनी शक्ल देखी है. मतलब अगर हिंदी में डायलॉग लिखते तो शायद ये एक डायलॉग हो सकता था उसका, है ना. So we have one story on Shakuntala and okay. based on Mahabharata. तो यू हैव पिक्ड अप द महाभारत वर्जन. लेकिन इसमें आपने एक और पॉइंट बोला था कि जैसे कालिदास ने जो किया वो एक पर्पस से किया उन्होंने, राइट, इट वाज सर्विंग अ पर्पस. That's why the universe of the piece of art must always be considered as an integral one, and you have to derive the meaning of situations and characters within the universe. That is extremely important. So I mean, in the stories in Aryaa also, have you taken these kind of liberties in certain cases where the modern context also need to be carried with the story, because the story is few thousand years old, right? Yeah. And the society then is very different than the society of today. True. And as you said that Kalidas ke time mein bhi itni different thi ki he chose a way to tell the same story which was more suited to the times that he was writing, right? Same with, let's say, Tulsidas. When he wrote Ramcharitmanas, he told the same story, but he changed it to certain extent to highlight the time that he was living in, right? It was also a mirror to Tulsidas's time. So वैसा कुछ आपने अपनी कहानियों में भी कुछ एलिमेंट्स हैं? This is a very important question. One of our guiding principles was to not alter the characterization of these 10 characters as it appears in the Veda Purana, Itihasa Purana, Upanishads. So we did not alter the characterization to, to reflect any modern sensitivity. We did not want to do that. It is only in the narrative that we are modern. Okay. That does not mean that we have not taken liberties, but the liberty taken should not contradict anything that is existing within these texts. That was the guiding principle. So largely we have stuck to that. कुछ कहानियां में, कुछ characters में information we have in plenty. तो imagine करने के लिए, to connect the dots and fill the gap, the scope is also higher.
यस, जिसमें कम इंफॉर्मेशन है, स्कोप इज हायर। हायर। लेकिन कुछ कुछ कहानियों में that information is not high, so imagination also becomes more difficult. So that means, we had to imagine a lot more to, form a full story. But लेकिन उनमें, it's not the modern sensitivity being thrust on it. That was not the purpose of the imagination. The way the imagination was done was to imagine what is the relationship of this character with others and what others went through. So the moment you establish the relationship with other characters and bring them, अपने आप में imagination, builds up. To imagine what is Subhadra's relationship with Arjuna. What could have been Subhadra's relationship with Yudhishthira? What could have been हाँ, वो एक्सप्लोर नहीं किया गया महाभारत में उस तरीके से। So that you can still explore without violating the boundary of the tradition. Yes, of course, eventually it's a contemporary, it's a story, written by people of a certain time. So certain concerns of today will definitely step in, but not by violating the boundary of the tradition. That has been the guiding principle of the anthology. To what extent हमने इसको निभाया है, वो तो समाज ही बताएगा। हाँ, और समाज में अगर वो ओरिजिनल कहानियां पढ़ी हैं तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस आल्सो, एंड माय whole thing is that you are not making any claims about this कि भाई हम तो महाभारत ही बता रहे हैं आपको, राइट? लोगों को ये आप क्लियर बता रहे हैं कि भाई इसमें हमने एक फिक्शनल एलिमेंट्स हैं, हो सकता है थोड़ा वेरिएशंस हो जो कि डिफरेंस हो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से, और आप उसको उस तरीके से ही कंज्यूम करो। क्योंकि इससे एक चीज मुझे याद आई कि बहुत सारे लोग, एक बार कोई मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि जब उनको पता लगा कि हम सूत्रधार में क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ हमें भी बड़ी समझ है इसकी। तो हमने बोला बड़ी अच्छी बात है। बोले हमने जया और पैलेस ऑफ इल्यूजन पढ़ी है। तो हमने कहा आपने नॉवेल्स पढ़े, आपने महाभारत नहीं पढ़ी। आप अगर एक अच्छे नॉवेल्स है, राइट? अब जैसे मृत्युंजय बहुत अच्छा नॉवेल है, राइट? मेरे पास भी है। पैलेस ऑफ इल्यूजन बहुत बढ़िया नॉवेल है, लेकिन आप उसको पढ़ के महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, आप पैलेस ऑफ इल्यूजन पढ़ रहे हैं, आप मृत्युंजय पढ़ रहे हैं। और जब तक आप इस चीज को लेके क्लियर हैं तब तक कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पे वो लाइंस ब्लर हो जाती हैं कि अरे बी आर चोपड़ा की महाभारत में मैंने ये देखा था, उसमें तो ऐसा बोला था, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बी आर चोपड़ा का उद्देश्य अलग था, राइट? Exactly. All शिवाजी सावंत का उद्देश्य अलग था। All retellings will have some contemporary concerns. For instance, our contemporary concern is that there is, the characters are so fascinating, but we seem to have a totally reverse view in our times, and we need to tell people that, what is the characterization in the epics of our heritage. So that is our concern. So like that, हर वक्त में एक कंसर्न। तो अभी हम लोग टुवर्ड द एंड ऑफ, हाँ अनुज? Beyond the scope of individuals like us who are not in the scheme of things, I think hopefully the pressure is building up and some things are going to change. Let us hope for that. I feel that there are more people concerned about wanting to change the education and the narrative, and it got spoiled only in the last 30-40 years. Not even in 80s में जब हम पढ़ रहे थे, even at that time the narrative was not this bad. Yeah, let's hope, but I'm pretty confident that there are people working. तो मुझे लगता है कि मेरा टेक थोड़ा सा अलग है इसमें कि एजुकेशन सिस्टम में जो लोग हैं, जो उसके सर्वे सर्वा हैं, वो ऑब्वियसली कुछ करें ना करें वो उनके हाथ में है।
लेकिन जो आर्या जैसा एफर्ट्स हैं या जैसे हमारे जो ये एफर्ट्स हैं सूत्रधार हुए, वो लोगों को एटलीस्ट हमारे एंशिएंट नैरेटिव के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे आर्या पढ़ के कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को बता सकता है कि देखो बेटा ये कहानियां हैं, रादर देन जब बच्चा बोले पापा कहानी सुनाओ, तो उसको आप जिंगल बेल या सॉरी जिंगल बेल तो बहुत ज्यादा नर्सरी राइम स्टेज पे चला गया, बट लेट्स से आप जंगल बुक या आप क्या बोलते हैं एल्सा, आना, सिंड्रेला, प्रिंसेस डायरीज, वो सब कहानियां सुनाने के बजाय आप उसको शकुंतला, कुंती, द्रौपदी, इन सब की कहानियां सुनाएंगे, तो उसमें नॉलेज पे भी है कि जैसे पेरेंट्स को नॉलेज होगा तो ही वो ट्रांसफर कर पाएंगे। No, तो and इसमें दोनों लोग को जुड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी जुड़ना पड़ेगा। and one Amarachitra Katha and one Chandamama, the way it anchored 20-30 years in our civilization, at least until. So maybe we will at Sutradhar we will, and Indic Academy would probably together try to do something to at least educate people beyond their curriculum कि भाई ये भी है और ये आपका है, ये borrowed नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है is that the society should never abandon the agency to make its own impact. And the society, of course, the government, the education system has to do what it has to do, no doubt about that. We should never undermine the, generative power of what state institutions can do. Correct. But society, and they will do what they have to do. I'm sure, because at least the direction we are going doesn't seem to be wrong. To be honest, जैसे new education policy में उन्होंने बोला कि भाई आप vernacular language में भी पढ़ाइए, right? जब हम IIT में गए थे पढ़ने के लिए, तो हमको इंग्लिश का एक कोर्स करना पड़ता था टू बी एडेप्ट विद द इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे उनको पता ही नहीं, मतलब उनको सीधे क्लासरूम में नहीं बिठाते थे, पहले उनको इंग्लिश पढ़ाते थे फिर उनको क्लासरूम में बिठाते थे। तो इससे आपने ऑलरेडी अपनी एक जनरेशन को हैंडीकैप कर दिया कि आपको इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश शुड नॉट बिकम ए हिंड्रेंस इनटू गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड स्लोली प्रोबेबली देयर विल बी मोर सच चेंजेस, एंड लेट अस सी। बट अपने तरफ से हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, जो सिस्टम चेंज होगा वो सिस्टम चेंज होगा, जो हम चेंज कर सकते हैं वो हम चेंज करेंगे। और जैसे आपने अमर चित्रकथा को बोला कि उन्होंने 20-30 साल तक एंकर किया, हो सकता है हम अगले 40-50 साल तक एंकर कर पाए, वो हमारा मतलब मिशन है, और मतलब अगर कर पाए तो अच्छी बात है। अनुज, और किसी के क्वेश्चंस हैं क्या? तो अभी अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी रैप दिस अप, क्योंकि हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक दो नाम भी लिए हैं, लोगों को पता नहीं है कि कौन 10 लोग हैं, तो अगर आप ब्रीफली अगर आप एक एक लाइन अगर बता सकें कि भाई कौन है और कैरेक्टर और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारे ऑडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग अबाउट दीज कैरेक्टर्स इन द बुक। So, yeah, I think it's important. The first character is Chitrangada. She's the wife of Arjuna, who gave birth to Babruwahana. And, she has a warrior background, and that is the story. It's a fascinating story of how the relationship between Chitrangada and Arjuna evolves. The second story is, and that is written by Rohini Gupta. The second story is Damayanti, and like we have Savitri being the hero of her story, Damayanti is the hero of her story. And apart from the story is somewhat always narrated, as Nala's story, but it is actually Damayanti's story. And the way Damayanti overcomes her situation and then puts all the efforts to find Nala, and then finally finds and really, transforms. It's Damayanti who finds Nal, not the other way around. Finding Nala is Damayanti's story. The third story is Shakuntala. So we forget that her son, is the civilizational anchor, Bharata. Correct.
Bharata's, how she shaped Bharata. That is the story of Shakuntala. And that is written by a young author, Prasad Kulkarni. The fourth story is Subhadra, written by Bharati V. It brings out a very fascinating dimension of Subhadra, which is somewhat there in the tradition, in the Mahabharata, but not explicitly called out. And it's important to know that it is Subhadra who carries forward the legacy of Pandavas, Kuruvansha, and what she must have gone through at that transformational moment in parampara. The enormity of the civilization was on her shoulders. Then the fifth story is Madhavi. This is at one point in time it was quite well known as a story for some reasons, and we've brought out the traditional narrative, and this is written by Madhurima. And Madhavi is another exceptional character in Mahabharata, and her journey is extraordinary, and the choices she makes and the way she shapes, and she has a very deep impact to make in the course of this parampara itself. And she's a very revered and respected lady in the tradition, and some of the modern narratives have not been correct about her, and this story sets it right. Then we have Ulupi. Ulupi is very quiet a character, but she has her presence at various points in Mahabharata, and this story is very well brought out by Rajani, and you will see how every character, if you read the originals, like you said, every character, even if the character comes for a very short duration, impact is very strong. Correct. That is the nature of, that is the way Mahabharata has been. There are no wasted characters. No, not a single wasted, generally coming character in Mahabharata. Correct. And Ulupi comes at various points in time, and if you stitch all of that together, you get a fascinating story. Because characters come at various points in time, sometimes you miss it. Only in your repeated reading, you get that. And this story demonstrates that. Then you have the story of, great Satyavati. She has a statesmanly presence, and she rules the kingdom, arguably the first ruler. And everybody else listens to her, and she takes so many decisions. I mean, there is no better example of navigating through through treacherous times and anchoring dharma, and thinking beyond your own self. And they literally almost lost the dynasty had it not been for her, right? For her, her presence is far more deciding than even Bhishma's at some point in time. She tries to stitch everybody together, and it's an inspiration to read Satyavati's story. Yeah, I mean, the popular narrative is that it was Bhishma who was the decision maker, and Satyavati was the woman at the background who just only stamping the decisions. It is wrong. I mean, if you read the Mahabharata, people would know that at times Satyavati is asking Bhishma to do X, Y, Z, not the other way around. And wherever things go wrong, she takes responsibilities of those things, and she follows it. And that is written by Deepak Amar. And then we have Gargi, who is very, very well known, and she's also the favorite of even detractors, I would say, for various reasons, that are not very difficult to imagine. But this story written by Salya Pillai, it sets that narrative perfect as to what is the position of Gargi in the tradition, within that universe, what she does, what is her engagement with Yajnavalkya, and
what is that essence of that conversation from this tradition standpoint? What aspects of Gargi, what personality of Gargi does it bring out? All this is very beautifully brought out in that. Then you have और ये गार्गी के लिए आपने सोर्स क्या देखा है, मतलब उसके लिए? though there is that, there is yoga, Yagyavalkya yoga, that conversation. The conversation between Yagyavalkya and Gargi and Maitreyi. That is the primary source that we have referred to. Good. Yeah, there are 2-3 references. One reference, a prominent reference is that. And Maitreyi. दोनों आपने मतलब गार्गी और मैत्रेयी दोनों पिक किए. Contrast is important, Correct. Both the sides of the coin. And they both play a very different role. Gargi is standing outside and challenging. Maitreyi is within and aiding that process. And there is a relationship between Katyayani, Maitreyi, and Yajnavalkya. So that triangular relationship is very beautifully brought out. What makes these two stories will show you what makes Yajnavalkya finally. So is there a crossover between these two stories? I mean, both the authors interact more than the other authors when they were writing this? Not really. I'm interested. But yes. Not really, but yes. To harmonize and ensure that the universe is fully present. To that extent, they have interacted between each other very significantly. So you have more information about Gargi and Katyayani. I'm sorry, Maitreyi. Yeah. Not much about Katyayani. But whatever is there, in the context of the personalities of the other two, this character evolves. That is how we have fleshed out these stories. Okay. The last story is really very fascinating. It is the story of Shandilya Duhita in Mahabharata. Shandilya's daughter. Yeah. So in that story, what happens is she's I won't let the detail of the story. It's important that people read it. It's in the form of verses actually, and her journey is exceptional. And she's a tapasi. She's a tapaswini. She's an ascetic. And there are references to tapaswinis in the tradition, and their journeys are extraordinary. And they chart their own paths. They carve a niche for themselves. So the tradition has, while it creates some boundaries, it also figures out how to place people who are obviously beyond those boundaries. And that balance is well struck. And those journeys are also represented with equal reverence in the tradition. And that's why Mahabharata is beautiful. In Mahabharata, if you ignore Shanti Parva and Vana Parva and the early parts of Adi Parva, you will lose a lot actually. They are the most important, in my opinion, parts of Mahabharata, which are often ignored also. The most ignored parts are the most important parts. Because the journey of Kauravas and Pandavas, they get their meaning from these stories that are also there. And they're all told to Kauravas and Pandavas and or to Janamejaya or to the, Shaunakadi Munis in various places. They are told because, they are told in a way as to how to understand the tradition. What is the tradition's viewpoint on a certain aspect. So often they act as, complementing the other part of the, same subject. So to read Mahabharata without in total ignorance of Adi Parva and Vana Parva and Shanti Parva stories, even the Udyoga Parva stories, would be disastrous from the understanding of the tradition. Some of these stories have been picked from there. So my personal experience about reading Mahabharata has been last that point is the Maitreyi has been written by Kavitaji, and Shandilya Duhita is written by Ranjit Radhakrishnan.
Very good. So I was just saying before I conclude that and this is more I am addressing the audience as I always try to do to nudge them to read Mahabharat and nudge them to read Valmiki Ramayana unabridged version, and Absolutely. that is what I insist upon most of the Yeah. time, I think because जैसे अभी we have to bring that back of having Mahabharata and Ramayana original versions with verses and their meaning. And you know, you even if you all you have to do is read the original so that your understanding of your it civilization. enhances your personality also. I have experienced. I keep telling people that if I meet someone and if the person, the conversation I have, the quality of conversation improves if the person has read Mahabharata. There is no And if you have read unabridged version, basically the idea, जैसे कि आप नल दमयंती का आपने एग्जांपल दिया, right? दमयंती की सिचुएशन स्टोरी किस पॉइंट पे आती है महाभारत में, वो भी इंपॉर्टेंट। आप खाली ये बोलते कि ये कहानी महाभारत में है, लेकिन उसका पर्पस है, वो एक पोजीशन पे है और वो एक पर्पस से है वहां पे, राइट? कि भाई युधिष्ठिर इज लैमेंटिंग अबाउट द सिचुएशन देन। और ये बहुत अच्छी चीज है हमारे साहित्यों में कि कभी भी कोई भी बात करने का तरीका उनका इतना अच्छा है कि जब बात करते हैं तो बोलेंगे कि अरे ऋषिवर मेरे साथ बड़ी समस्या है, तो ऋषिवर बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम पहले नहीं हो जिसको ये समस्या हुई है, तुम्हारे पहले भी किसी को ये समस्या आई थी, उन्होंने समाधान निकाला तो आपको भी मिलेगा। एक रीअश्योरिंग तरीका है कहने का, है ना, कि आप उसको फ्लो। करेक्ट। एंड देन इट आल्सो टाइज टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। लोग उसको, अब आप ये एज्यूम करते हो, लोग ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर तो जुआरी थे इसलिए द्यूत में फंस गए, और उसका एविडेंस देते हैं कि देखो जब वहां पे कंक बने तो वो भी उन्होंने द्यूत का ही काम चुना। बीच की वो नल दमयंती की स्टोरी तो किसी ने पढ़ी नहीं, तो किसी को वो पता ही नहीं है कि एक नोविस, एक नूब प्लेयर से वो एक एक्सपर्ट प्लेयर कैसे बने, वो भी एक्सप्लेन करती है ये स्टोरी, राइट? तो जब आप पूरी एक थ्रेड के साथ पढ़ते हो, सूत्रधार इसीलिए हमने अपना नाम रखा है कि ये सूत्र जोड़ने बहुत जरूरी है, और अगर आप उसको जोड़ते हो तो आप उसको बेटर समझते हो। और जो मेरा ये कहने का बार बार मैं कहता हूं कि महाभारत एक कहानी है, लेकिन कहानी से कहीं ज्यादा भी है। तो जब आप उसको केवल कहानी की तरह एंजॉय करना चाहते हो, फिर तो आप पहले ऑफ इल्यूजन भी पढ़िए, जया भी पढ़िए, मृत्युंजय भी पढ़िए, सब पढ़िए। लेकिन जब आप उसका कहानी के बियॉन्ड वाला जो पर्पस है, जो एक धर्म ग्रंथ वाला पर्पस है, अगर आप उसको डिबेट करना चाहते हो तो आपको महाभारत ही पढ़ना पड़ेगा और पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप वर्सेस कोट करते रहेंगे और यू विल मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। अभी हंस और डिम्बक का कुछ एक स्टेटमेंट आया था, तो आज ही हमने पोस्ट किया है हरिवंश का स्क्रीनशॉट कि देखो इसमें वो दोनों भाई भाई हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब लोग बात करते हैं बिना पूरे नॉलेज के, तो दे एंड अप मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज़ दीस लिटरेचर आर ऑलवेज अवेलेबल for somebody to refer to. So even from that perspective also, if you read, it's good for you also. So just to conclude this, thank you Shiva for giving us your valuable time. We wish good luck for Arya and all the authors, and if you guys are interested in buying Arya, it is available on Amazon, and if there are any other places, Shiva, you can probably mention. It will be available on all online platforms in another 3-4 days, and slowly we'll figure out how to reach out to other platforms as well. So go ahead, buy the book, read it and enjoy. Tell it to your kids also, especially if you have a daughter. It's a must buy for you guys. And we will not stop here only. We will be continuing this conversation with Arya and in next segments also. So every Saturday and Sunday, next episodes of Kahi Suni, for the immediate future, we would be featuring the interviews with the individual authors of the stories, and we will talk about the character that they have written about and maybe try to find out more about their perspective and why they choose what they choose to write about. And that will probably make you even more curious and compel you to buy the book even more.
So signing off. Thank you for listening, and thank you for being with us. Thank you once again, Shiva.